design a particular molecule. So today we're going to analyze कि अगर जो हम molecule हम लोग ने डिजाइन किया है, जो molecule हमने बनाई है, क्या वो molecule drug हो सकती है? I mean, if it does it contain the necessary characteristics of the drug likeness and other parameters? So that is one thing that we should actually know, understand. Okay. So now in this particular case, we know that every drug has a particular pharmacokinetic parameters, and they also have a certain amount of drug likeness parameter. The thing is that how do we predict it? हम कैसे जानेंगे कि वो एक जो ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं उसके पास ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स और ये ड्रग लाइकनेस पैरामीटर सब है या नहीं? हाउ टू एनालाइज इट? नाउ वन थिंग दैट वी कैन डू, दैट वी कैन सी फ्रॉम द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, जैसे कि लॉग पी वैल्यू, रिमेंबर द सॉफ्टवेयर, वहां से हम लोग लॉग पी वैल्यू कैलकुलेट देख रहे थे कैसा होता है क्या नहीं होता है, तो वी कैन कैलकुलेट. सो that is one thing that you can understand. But apart from it, you also have various other kind of properties, right? Like you have the hydrogen bond donor, acceptor, TPSA and all this. So how do you calculate all these things? और उससे भी बेहतर है कि एक मॉलिक्यूल हमें पता क्यों करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मॉलिक्यूल जो हमने बनाई है वो एकदम परफेक्ट मॉलिक्यूल हो. इट्स नॉट अ परफेक्ट मॉलिक्यूल, राइट? एंड that particular molecule, since it's not perfect, we have to analyze whether, and we have to make it perfect. So how do we make it perfect? How to analyze that particular thing? यही सब हम लोग आज जानेंगे, ठीक है? First, तो हम लोग कैसे जानेंगे? So there is a particular bioinformatic tool that we can actually use, and what is that? That is Swiss ADME. I'm sending you the link. Simply click on that particular link, and this is going to open. So this is one of the bioinformatic tools that actually allows you to design and develop and check whether a particular molecule has all the above mentioned criteria or not. Or criteria? All the pharmacokinetic criteria, the ADME parameters, the drug-like nature, and all the other. Now, what is ADME parameters? What is the full form of ADME parameters? Shankar? Absorption, distribution, metabolism, excretion. Exactly right. So these are the few parameters that one should actually, or every molecule must have, deemed as a perfect or a very good molecule, or to be part acknowledged as a drug. Okay. So the thing is that Yes, कैसे पता चलेगा? कैसे करें? Now see, first option is to that you can also design a drug over here. यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी एक पोर्टल बना हुआ है जहाँ से हम लोग ये मॉलिक्यूल डिजाइन कर सकते हैं. अब कैसे मॉलिक्यूल डिजाइन कर सकते हैं? सेम थिंग जैसे कि हम लोग केम स्केच में किए वही हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट केम स्केच ऑफर्स अ मच मोर बेटर थिंग. केम स्केच में और बेहतर कर सकते हैं वहाँ पे और इजीली होता है, तो हम लोग वही यूज करेंगे. फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना होता है. देखो यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि बेंजीन रिंग डालना हो तो बेंजीन रिंग्स बनाई हुई है. सिंपली क्लिक ऑन द थिंग दैट यू वांट टू पुट इन एंड सिंपली क्लिक ऑन दैट वाइट स्पेस. वंस यू क्लिक इट इन, ये यहाँ पे बैठ जाएगी और पता चल जाएगा कि अच्छा यही मॉलिक्यूल है जो हमें यहाँ पे बनाना है. So once you click that particular thing over here, you can obviously add another thing. Let's suppose I want to add this particular pentane. So where can I add? I can add this particular thing to this particular side. यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये पर जो है वो तो आते हैं और you can simply click on that particular edge over here. जैसे कि हम लोग स्केच में कर रहे थे, कहाँ करना है वहीं पे हम लोग बिठा सकते हैं. और एटम्स चेंज करने के लिए देखो यहाँ पे एटम्स दी हुई है, राइट? ब्रोमीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब है यहाँ पे. किसी को ऑक्सीजन लगाना हो तो ऑक्सीजन सिलेक्ट किया, फिर जस्ट click on that particular atom that you actually need to change. Now by default everything is carbon.
जस्ट मुझे 1 मिनट दो। तो देखो यहाँ पे तुम अगर यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे मॉलिक्यूल, और अभी अगर और भी मॉलिक्यूल जानना हो और भी एटम्स, तो कैसे? तो ये है पीरियोडिक टेबल। ये क्लिक करने से यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट आ जाएगी। यहाँ से तुम कोई भी एटम मॉलिक्यूल तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम इट यू ऑल्सो हैव द ऐड द प्लस चार्ज टू डिक्रीज और इंक्रीज द चार्ज ओवर हियर। एंड ओवर हियर यू हैव द चेन ऑप्शन। यहाँ पे फिर से क्लिक करें और फिर से खींचे जाए तो यहाँ पे ड्रॉ चेन ऑप्शन बनती जाएगी। ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव फॉर सिंगल मॉलिक्यूल चेन। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर लिए CH3 हो गया, यहाँ पे क्लिक किया ये बैठ गया। सपोज इसको अभी NH2 करना है तो N क्लिक करके यहाँ पे किया तो NH2 है। जैसे हम लोग केम स्केच किए हैं वैसा ही है, बट द थिंग इज दैट this molecule or chem sketch with the thing that you can do it more easily and you can perform much more other data also, जैसे कि enantiomer ये सब ढूंढना, upside bond downside bond, you can add the isomerism properties of a molecule too. That thing that you can't do it over here, but yes, or some, और झट से करना हो, कुछ करना हो छोटा सा molecule, for that it is really easy. So after you design a molecule you have to simply click on this particular red button. यहाँ पे क्लिक करो तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल का स्माइल नोटेशन यहाँ पे आ जाएगा। नाउ रिमेंबर द स्माइल नोटेशन। यस सर। तो क्या हो गया, अगर कोई मॉलिक्यूल की यहाँ पे क्लिक करो तो स्माइल नोटेशन आ जाएगी। पर अगर जो मॉलिक्यूल हम केम स्केच में बनाए हैं उसका मुझे अगर प्रॉपर्टीज निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? देन you simply have to copy the smile notation over there and simply paste it over here. यहाँ पे लाना है मॉलिक्यूल, वहां से कॉपी पे कॉपी कर लिया स्माइल नोटेशन, फिर बस यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने से ऐसे कि यहाँ पे ये था तो मतलब पेस्ट करने से ये आ जाता है। सो लेट मी fill it up with an example. If you don't have a molecule right now, simply click on this particular button over here, fill it with an example. तो यहाँ से example बढ़ जाएगी। ओके, now all you have to do is simply click on the run option. Once you click on the run option, what it's going to do is going to start analyzing the molecule that you have developed. और फिर बताएगा कि हाँ वो molecule ठीक बना या नहीं. Now the thing is that now you know that to be effective as a drug, any molecule it must reach its target in the body in sufficient concentration, and it must stay there in the bioactive form long enough for the expected biologic event to occur, right? And that is why, to understand the effectivity of a drug, we analyze this particular ADME properties, and that actually gives us this entire idea. Now the thing is that a large variety of the in silico methods that we have, it actually share the objective of predicting the ADME parameters just from the molecular structure. Now, Lipinski was actually, and he actually examined, remember the Lipinski rule? Yes, sir. Yeah. So, what was Lipinski rule? What are the criteria for Lipinski rule? Not remember, sir. यार पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बहुत इजी है। क्या क्या था, 2-3 पैरामीटर बताओ। One is molecular weight. Mol weight. Molecular weight. और hydrogen bond donor. Number of hydrogen bond donor acceptor. And clear log P, C log P. देखो याद तो आ गया, तो पहले बोलो याद नहीं है, सब तो याद है। So what Lipinski did, he actually analyzed the orally active compound to define this particular physicochemical range for high probability of an oral drug. So this is the range that he actually devised and told. Now there are actually many other methods, people have developed many other rules for this particular drug, and we actually follow this kind of thing. Now, apart from the drug likeness parameters, we also have some physicochemical parameters of a particular molecule. And why it is required?
because the physicochemical parameters, it actually gives a global description of the structure, and molecules can be directly described by this substructure searches. Okay, now there are actually various methods that actually are libraries that actually deduce whether a molecule is unstable, reactive, or uh, toxic in a particular method or not. Okay, now the first you have is this particular thing called the, now once you see that, once you develop a molecule, you develop this particular small option over here. So this is the chemical structure of the molecule, and this is the smile notation of your molecule, designed molecule. Okay, and what is this? This is the entire property of the molecule, entire property of the molecule that they simply visualize just to get the idea that molecule kaisa hai. Now this thing is that the output, these are the output panel. Now this is actually loaded in the same web page, and one thing is that there are different sections over here. Just simply check how many different sections over here. Now if you don't have time, then it's really impossible to, you have to go through all these panels obviously, but this particular gives you a very brief idea about the nature of your molecule. Okay, this is actually the chemical structure and bioavailability radar. Okay, now what is this? Now this section includes two-dimensional chemical structure and the canonical smile. Okay, and it's in short tells you how much your molecule fares in every property. The first is their lipophilicity. Then you have the size over here, and if you simply hover your pointer over there and keep it, you're going to, you can see the rates range also. What is the lipophilicity range? What is the size range? What is the polarity range? The insolubility range. यहाँ पे सब तुम्हें दिख जाएगी. Then you have the polarity, insolubility, insaturation, flexibility. But what about this pink hexagon? Now this pink hexagon is actually the outer limit of every property. यहाँ पे जो जो भी प्रॉपर्टी दी हुई है उसकी आउटर लिमिट है ये पिंक हेक्सागन. और देखो या अंदर भी एक छोटा सा इनर लिमिट भी है, राइट? Yes, sir. व्हाट इज दिस? बिकॉज द साइज, साइज क्या था? साइज 0 से स्टार्ट होता था क्या? Yes, sir. नहीं, द साइज रेंज वाज एक्चुअली 150 टू 480 ग्राम पर मोल. Yes, sir. है ना? तो ये क्या है, देखो यहाँ पे नीचे एक लोअर लिमिट भी है. द लोअर लिमिट इज 150 and the upper limit is 500, but for all the other parameters the lower limit is actually 0, so it's starting from the 0 for all the other parameters. And what is this red line? The red line is actually the parameter of your molecule. तुम्हारा जो molecule है वो molecule कहाँ किस हद तक जाती है, उसको लिपोफिलिसिटी कितना है वो दिखाने के लिए red molecule है. So why do I need this chart? Because simply by taking a look into this chart I can say that whether my molecule is doing well or not. अगर उसका कोई भी रेंज इसके बाहर जाता तो हमें पता चल जाता कि मेरा मॉलिक्यूल लिपोफिलिसिटी या फिर साइज या पोलैरिटी, इंसॉल्युबिलिटी, इंसैचुरेशन किसी में तो ठीक से काम नहीं कर रहा है, एंड इट इज गोइंग बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट. एंड ऑब्वियसली इफ इट गोज बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट देन यू हैव टू एडिट द स्ट्रक्चर. तो बस वो देख के ही अगर हमें पता चल जाए कि मॉलिक्यूल ठीक से बना है या नहीं, क्योंकि अगर ठीक से बना नहीं है तो बेकार में उसका पूरा एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है. Okay, just to give you the idea. And again, I'm repeating again, there are 6 physicochemical properties that are taken into account. And what are those? Lipophilicity, size, polarity, solubility, flexibility, and the saturation. Okay, and each physicochemical range on each axis that is actually defined by the descriptors that are adapted from various other methods like Lipinski rule, Gaussian rule, all these rules. Okay. Now, after you get this idea, the next thing that you come to know is the physicochemical properties. Now, see. Now, simple molecular and physicochemical descriptors like molecular weight, molecular refractivity, the count of specific atom types, the polar surface area, all these are compiled in these sections. Okay. Now, the polar surface area is actually calculated using the fragmental technique, and
Which technique it is? It is a technique that is known as TPSA. What is TPSA? It is the total polar surface area, and it considers the sulfur and phosphorus as polar atoms. And this has actually proven a very useful descriptor in many models and rules to quickly estimate some of the ADB properties, especially with regards to biological barrier crossing such as absorption, brain access, this kind of thing. Now the next section that you have, now what are the other things that you have? You have the molecular weight, the number of heavy atoms. You have 15 heavy atoms. Number of aromatic heavy atoms, 6 aromatic heavy atoms. Because see, the aromatic group, there are 6 heavy atoms, right? Carbons are there in this particular aromatic compound. So there are 6 aromatic heavy atoms. Again, you have the TPSA. What was the range of TPSA? See, it should be less than 140 angstrom square, right? TPSA. And what do I have over here? I have 37.30. So it's less than 140 angstrom square. So it is actually well accepted. Next, you also have the number of hydrogen bond acceptor, C2, number of hydrogen bond donor, and that is 1. So all these events are also given. Next, you have the lipophilicity. Now, what is lipophilicity? Lipid level. Lipid level, exactly. Now, see the partition coefficient between this. Now, how do we calculate the lipophilicity? कौन सा पढ़े थे? Lipophilicity. याद नहीं है सर. अभी तुमने बताया कुछ देर पहले. कुछ देर पहले तुम ही ने बताया. लिपिंस्की रूल में क्या क्या था? एकदम लास्ट में क्या था? और लिपिंस्की C log P. Log P, partition coefficient सही तो. Because what does partition coefficient tell you? The how much it is water soluble? Now, if a molecule is highly water soluble, will it be soluble in lipid? Shubhankar? If a particular molecule is water soluble, will that molecule be lipid soluble as well? No, sir. Nahi. So this is how you calculate, simply by using the log P value, the partition coefficient. And the partition coefficient is between which two compound? कौन से compound में partition coefficient किया जाता है? Water and 1 octanol. ठीक है? Water and 1 octanol. Okay. That is actually the classical descriptor for lipophilicity. Now, this particular section, as you see, it's so important that it has a dedicated section in this Swiss ADME. Why? Because of its critical importance of this particular physicochemical property for the pharmacokinetic drug discovery. Now, there are actually many computational methods that are there for log P estimation, and they were developed with diverse performance on various chemical sets. Now, the common practice is actually to use the multiple predictor either to select the most accurate methods for a given chemical series or to generate consensus estimation. Now, the model behind this particular predictor, it should be as diverse as possible to increase the prediction accuracy through this consensus log P octanol by water that you can see at the last. Okay. And now, in this particular regard, the Swiss ADME server, it actually gives access to 5 freely available predictive model. You have the I log P, the X log P3, the W log P. So what is X log P3? X log P3 is an atomistic method that includes the corrective factor and knowledge based libraries. Whereas this W log P, it is actually the Swiss ADME server's own implementation of the purely atomistic method based on the fragment system of Wildman and Crippen. Okay. Whereas the M-log P is actually the archetype of topological method that relies on linear relationship with 13 molecule descriptors. Now, how do you know it? Simply hold your mouse over this question mark. If you simply hold your mouse over the question mark, it is simply going to tell you the detail of this particular thing. See? The atomistic and knowledge based method calculated by X-log P program. This was developed by Shanghai Institute of Organic Chemistry
whereas W log P was actually developed by Wildman and Crippen, whereas M log P is developed by various people, Moriguchi, Lipinski, okay, and they all developed this particular system. And the thing is that, as you see, lastly you have the silicosity. What is silicosity? Silicosity is actually a hybrid method that relies on 27 fragment and 7 topological descriptors. Okay, and all of them tell you or give you a idea about this particular lipophilicity. That means what? So log p is 0. The I log p tells it's you have a value of 2.17. The x log p3 tells a 3.5 value. And the thing is that everything is calculated and an average value is taken. And that average value is actually shown by this consensus log p. What is O by W? It is octanol by water. Okay. And it gives you an average lipophilicity value, that is the 3. Okay, now why did it give so? Because to cover maximum identity, एक एक जो descriptor है, एक एक जो tool है, that tool behaves as it is. उसका खुद का behavior अलग है दूसरे program से. So to understand and see whether everything is okay or not, they simply calculate the entire thing. पूरा कैलकुलेटर के पता बोल देता है कि ये ठीक है या नहीं, इसका एवरेज वैल्यू क्या है. So after this lipophilicity, the next section that you have is the water solubility. Now, why is water solubility important for a particular molecule? Because mostly water is found in our body. Yes. And how does it help? It helps in solubilize the solute. Yeah, see, having a soluble molecule, it greatly facilitates many drug development activities, specifically the ease of handling and formulation. Okay, and moreover, for discovering projects targeting oral administration, solubility is one of the major properties that influence absorption. And Yes. the drug that is meant for parental use has to be highly soluble in water to deliver a sufficient quantity of active ingredients in the small volume of such pharmaceutical dose. And there are two topological methods to predict the solubility that is included in this Swiss ADME server. The first one is the implementation of the ESOL method, and the second one is developed from the Ali et al. Ali was the scientist who developed this method. So what is this ESOL? Now the thing is that how are they different? Now both of them are actually different and they differ from the seminal general solubility equation because they avoid the melting point parameter. Okay. Now they also demonstrate a very strong linear correlation between the predicted and experimental value, and they have a R-squared value of approx 0.8. And we know the higher the R-squared value, the better your model is fit for a particular graph, right? You know about R-squared value, right? Shubhankar, you know about R-squared value? No, no. Acha, you have plotted a graph before, right? Graph बनाए हो कभी? Yes, sir. So what happens that whenever you plot a graph, तो होता क्या है? हम लोग तो points डालते गए, but then you have to actually develop you have to fit the curve. You have to fit the curve. So the thing is that how do you know whether the curve that you have fitted is absolutely okay or not? तो ऐसा हो ही सकता है एक molecule. Let me show you one example. देखो, take a look into this particular. देखो, यहाँ पे क्या है? ये जो dots है, the dots are the points, right? Yes, sir. And ये line अब डॉटों के बीचों से गुजर रहा है. The thing is that for see every molecule, the shape of the curve is different, right? The shape of the curve is different. Yes, sir. Now how do I know whether that molecule और ये जो line मैंने fit किया है curve पे, this is actually a good fit? ये एकदम ठीक से fit हुआ या नहीं? ये हमें कैसे पता चलेगा?
आइडिया नहीं है सर। ये पता चलेगा आर स्क्वायर वैल्यू से। आर स्क्वायर वैल्यू एक ग्राफ का निकल जाता है एंड दैट एक्चुअली टेल्स यू हाउ मच फिट योर मॉलिक्यूल इज। आर स्क्वायर वैल्यू द मैक्सिमम इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, 1 being the highest। 1 हुआ मतलब द वेरी गुड फिट, द बेस्ट फिट इज द 1, और एकदम फिट नहीं हुआ दैट इज 0। So the higher or the greater your R square value, the better your graph fitting is। तो कभी कभी क्या होता है, R square value is obviously we want our R square value to go above 0.98। okay, 0.9, 0.99, 0.98 रहा, जितना हायर होगा उतना बेहतर है। Now the thing is that sometimes R square value falls below 0.5, 0.4, that means it's a not good fit। So the higher the value the better your model। So obviously for this particular model over here, यहाँ पे जो मॉडल है, इस मॉडल पे जनरली आर स्क्वायर वैल्यू फॉर लॉग एस, इसका भी तो कर्व बनता है, तो इसका कर्व जनरली फॉलोज अ आर स्क्वायर वैल्यू ऑफ 0.8 which is pretty good। that means it's pretty good forming because I am taking a lot of molecules over, right। हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, so that actually gives you an idea। now they give you the solubility criteria। so first the log E star मतलब -3.36 and simply hover over here and you're going to know what does it mean। next you have the ESOL value of -3.97। they also give you the solubility value depending as a mg per ml method। ये molecule accordingly कितने mg per ml पे solubilized होता है। so it actually gets solubilized at 9 mg per ml, not 9 into 10 to the power -2। that means it is 0.09 mg per ml इसमें soluble होता है। but what is the class that it belongs to, बस ये देख के क्या पता चलेगा कि whether it is soluble or not। so next you have the class। so see that there are various classes, there is insoluble, poorly soluble, moderately soluble, soluble, very soluble, highly soluble, and depending on that, depending on your value of this particular ESOL method, the solubility class lies। if it is above -10 then it is insoluble। so since I have a -3 value, it falls under this particular soluble section because -2 to -4 is soluble, y is -3.3, so it is soluble। similarly every method it actually calculates and gives you an idea। now the three program calculates and says that it is soluble, that means we can say that yes, this molecule is water soluble। now obviously if it is highly soluble, if it is very soluble, then that is much more better, but obviously solubilized is itself enough to be granted as a good molecule। okay, the thing is that every बेहतर क्या है, अभी तीनों मॉडल जब बोल रहा है कि इट इज सॉल्युबल, देन आई कैन प्रीटी श्योर एश्योर दैट यस इट्स सॉल्युबलाइज्ड मॉलिक्यूल। क्लियर। so next is the most important thing that you have is the pharmacokinetics of this particular molecule। okay, now the first you have is a GI absorption। what is GI absorption and what is pharmacokinetic parameter? Gastrointestinal absorption। yeah, the gastrointestinal tract absorption। what is that? मतलब एक दवाई तुम अगर खाओ तो वो पेट के अंदर से पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, पेट या तुम्हारा जो स्टोमक के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन कितना होता है, is it a very good absorption? so that actually is the thing that it predicts। so यहाँ पे ये दिखा रहा है कि it's high soluble, high absorption, मतलब मॉलिक्यूल अगर तुम डाल दो तो ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। that's very good thing। yes, it's a very good absorption molecule। the next thing you have is the BBB permeament। what is that BBB? This is the blood-brain barrier। blood-brain barrier permeament, and it says yes। and what is blood-brain barrier? generally there is actually a barrier between the your brain stem। तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारे बॉडी के बीच में एक ब्लड ब्रेन बैरियर है। क्यों? because it is made up of arteries and arterioles and nerves and endings and all। why? because it prevents the entry of any molecule। कुछ भी molecule आ जाए वो prevent करता है कि यार तुम नहीं जाओ, because some molecule not only molecule, it also prevents the entry of bacteria and viruses, because you have seen a lot of bacterial and viral infection in your body, but very few infection occurs in the brain, right? why? because it prevents the access, because तुम्हारा brain is such a sensitive thing। वहां पे अगर infection हो जाए या कुछ भी हो जाए, that is going to be fatal for you, that have lethal effect। तुम्हारे ब्रेन पेट पे कोई इंफेक्शन हो जाए, पेट दर्द है,
वॉमिटिंग हो रही है, यू कैन सर्वाइव, यू नो दैट यू आर गोइंग टू सर्वाइव। पर जैसे ही ये दूसरे जगह पे अटैक कर देगा, ब्रेन पे अटैक कर देगा, थोड़ा सा भी ब्रेन डैमेज हुआ तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ लाइफ फॉर यू। तुम चल नहीं पाओगे, तुम खा नहीं पाओगे, मतलब यू वी डोंट नो। अगर मोटर सेंटर पे अफेक्ट किया तो तुम्हारा चलना फिरना बंद हो जाएगा, बात करना बंद हो जाएगा। दूसरे कहीं पे अटैक हुआ तो कुछ भी हो सकता है, राइट? एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। So there is a barrier that prevents entry of these molecules. Now, obviously, if you have a molecule which is not required for brain, then we don't want that molecule to take a medicine for headache. Then obviously that molecule has to reach the brain, right? वह सर पे बहुत दर्द है तो उस मॉलिक्यूल को सर पे पहुंचना है। सपोज किसी को टेल मी अ नेम ऑफ अ डिजीज ऑफ ब्रेन। Like migraine. Migraine is a headache, fantastic. Apart from it, suppose Alzheimer, right? Yes. Alzheimer. अभी Alzheimer patient को obviously the drug has to reach the brain. Yes, sir. Like prion protein deposition. Prion protein deposition occurs in the brain. So, to prevent it, I have to make sure that the molecule reaches the brain. So unless a molecule is required for the brain, we generally don't want the molecule to go into brain. पर यहाँ पे देख रहे हो कि ये molecule जो मैंने बनाई है, obviously while develop a molecule, I will have something in mind. So for this particular molecule, I don't know if it is not. If suppose it's an anti-cancer drug, if it is an anti-cancer drug, that is for your lung cancer or your liver cancer or suppose कोई भी pancreatic cancer का drug हो, then this molecule has no, इसको तो brain में जाना नहीं चाहिए, right? Now the thing is that suppose it says yes, that means this molecule is going to be penetrate through the blood brain barrier. ये blood brain barrier permeant है, ये brain पे चला जाएगा. So if it is a toxic molecule, you have to reduce the toxicity. और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यह मॉलिक्यूल ब्रेन पे कहीं अफेक्ट ना कर दे, ठीक है? जनरली इफ इट्स नॉट फॉर ब्रेन, वी डोंट वांट द मॉलिक्यूल टू गो इनटू ब्रेन। पर अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा हुआ, देन इट कैन गो टू ब्रेन बिकॉज ब्लड ब्रेन बैरियर परमिएबल, वहां पे क्या है बैरियर, इट इज एक्चुअली अ साइज बैरियर। जो बैक्टीरिया वायरस का साइज है उसे वो रोक सकता है, पर मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा हुआ तो उसे रोक नहीं पाता और वो पहुंच ही जाता है, ओके, ब्रेन तक। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट यू हैव इज द पीजीपी सबस्ट्रेट। व्हाट इज पीजीपी? पीजीपी इज द पी ग्लाइकोप्रोटीन, okay. Now the knowledge about the compound being a substrate or non-substrate for this permeability glycoprotein, that is pgp, it suggests the most important why what is pgp? Pgp, as I've told you, it's the permeability glycoprotein and it is actually a abc transporter. It's an important member among the atp binding cascade transporter, or in short we call it as abc transporter. What is that? Because this is actually a molecule and the key to appraise an effective efflux through the biological membrane, for instance from the gastrointestinal tract wall to the lumen or from the brain. Now, one major role of this pgp is to protect the central nervous system from the xenobiotics, okay, or and pgp is also highly expressed in the ट्यूमर सेल्स एंड इट आल्सो लीड्स टू मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन कैंसर। तो होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स जनरली सेल पे पाई जाती है। कैसे सेल पे? जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन सेल पे पाई जाती है। इसकी काम क्या होता है? इसका काम है कि कोई भी मॉलिक्यूल को लो, पकड़ो और उसको इफ्लक्स कर दो। मतलब ब्रेन पे ये रहता है, व्हाई? बिकॉज कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आ जाए तो वो ब्रेन उसको पकड़ता है और ब्रेन सेल के से बाहर उसे फेंक देता है, ओके। इट बाइंड्स टू द ड्रग and it vomits out the drug from the cell. Now, why it is there? Because to protect the central nervous system from xenobiotics. कि अगर कुछ ऐसी दवाई, कुछ मॉलिक्यूल साइज के थ्रू आ भी गया,
then also it prevents that particular molecule to get deposited into the cell. Cell के अंदर भी पहुंच गया तो simply उसे पकड़ेगा बाहर फेंक देगा. Because I don't know whether that molecule is a good or a bad molecule. It's like that particular doorman, right? The security guard. The security guard क्या करता है? सबको अंदर आने देता है क्या? अब अगर कोई इंपॉर्टेंट अंदर आ गया, सपोज तुमने एक किसी को सिक्योरिटी गार्ड बड़े होके एक सिक्योरिटी गार्ड को रखे हो यार, तुम सीईओ बन गए गूगल के, तो सिक्योरिटी गार्ड को रखे हो. अब तुम्हारे शायद पापा आ गए. अब सिक्योरिटी गार्ड को पता नहीं तुम्हारे पापा है वो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पापा तो तुम्हारे रेला लेके अंदर आ ही जाएंगे, है ना. अब जैसे अंदर आगे वो कहेगा बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, बाहर भेज देंगे. क्यों यार? पता नहीं उनको यार कौन है, उसे तो नहीं पता कौन है, राइट. तो बाहर फेंक देता है. This is how they protect the system. But the thing is that the cancer cell also develops this PGP, और तब प्रॉब्लम बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि ये ड्रग मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर फेंक देता है. सो कैंसर सेल पे जितनी पीजीपी होती है उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? तुम कोई भी एंटी कैंसर दवाई दो तो वो दवाई बॉडी पे और सेल पे काम करने से पहले वो दवाई को पकड़ के बाहर फेंक देता है. एंड दैट इज व्हाई द कैंसर सेल्स जनरली हैव मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस. ओके, so that is the thing. That is why you have to know whether it's a substrate for it or not. So agar if it's an anti-cancer drug, then it should not be a substrate for PGP. If it is an anti-cancer drug, क्वेरी है मेरा. हाँ बताओ. ये आइबुप्रोफेन आपने बनाया था क्या? ये कहाँ से आया? अरे यहाँ पे किया ना मैंने, फिल विद एन एग्जांपल. अच्छा, एक एग्जांपल डाला था. हाँ हाँ, ये एग्जांपल है. तुम भी बस यहाँ पे क्लिक कर दो, फिल विद एन एग्जांपल एंड क्लिक डन, तो ये शुरू हो जाएगा. अच्छा अच्छा. ओके सर. ठीक है. ओके सर. और अगर झट से बनानी हो तो कुछ बना के फिर रन करो तो भी आ जाएगी. बट सही होना चाहिए वो. क्या मतलब स्ट्रक्चर जो आपने बनाया वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. हाँ, जो दवा obvious. आज तक बन चुकी है. हाँ, obviously you have to check everything. That is why I asked you to see that particular जो तुम मॉलिक्यूल पे देखो सॉफ्टवेयर पे बनाओ, बिकॉज वहां पे से पता चल जाती है कि केम स्पाइडर पे क्लिक करो तो बता देगी वो मॉलिक्यूल है या नहीं, राइट. तो वहां पे तो केम स्पाइडर तुम्हारा है ही, सो यू कैन ऑब्वियसली चेक वेदर द मॉलिक्यूल इज अ नोवेल मॉलिक्यूल और नॉट. So after this PGP, so if it's an anti-cancer drug, it should not be a PGP substrate. So my drug is not a substrate for PGP. Okay. Next, what you have the most important thing, that is the cytochrome P450. Why? Because this super family of isoenzymes, it is actually a key player in the drug elimination through metabolic biotransformation. And it has been suggested that this CYP and PGP, they can process small molecules synergistically to improve the protection of tissues and organisms. एक दवाई को तुम अंदर खाओ तो पैरासिटामोल खा लो तो 4-5 घंटे ही काम करती है, राइट. व्हाई? बिकॉज द पीजीपी डिग्रेड्स द ड्रग टू प्रोटेक्ट योर बॉडी. बिकॉज कोई भी मॉलिक्यूल, एवरी मॉलिक्यूल दैट यू टेक फ्रॉम आउटसाइड, it is actually a foreign particle, right? And the body does not trust anyone. क्योंकि कुछ भी दवाई तुम ले लो, दवाई is good thing, but that दवाई is also a toxic molecule for you. If it is not Ayurvedic, then it's good. अगर आयुर्वेदिक ना हो तो तुम कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, it is going to be highly toxic for you. Highly toxic for you. ठीक है. That is why this PGP and all, they CYP, they degrade the drug. They simply degrade the drug so as to know whether the molecule is to save your body. Okay. Now there are actually, it has been seen that there are actually 50 to 90% dependency of therapeutic molecule, and there are 5 major isoforms of this particular cytochrome P450 that actually degrades the molecule. What are the isoforms? These are the isoforms: CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, and CYP3A4. Okay, and inhibition of this isoenzyme is certainly one of the major cause of pharmacokinetics related drug interaction. मैं बता रहा था ना कि कोई ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है कभी कभी. Why? Because
वो ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो कुछ मॉलिक्यूल होती है जो इस CYP की इनहिबिटर्स होती है. दे एक्ट एज अ इनहिबिटर फॉर दिस CYPs. और अगर ये CYP की इनहिबिटर जैसे काम करे तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल मेटाबॉलिज्म को रोक देगा, राइट. Yes. And we don't want to stop the molecule metabolism, and that's how it leads to toxic or other unwanted adverse effects due to lower clearance of the drug or accumulation of the drug or its metabolites in your body. Now, how do they find that whether the molecule will act as an inhibitor or not? Now, there are numerous inhibitors for the CYP isoform and that have been identified, and some are affecting different CYP isoforms while other compounds show selectivity for a specific isoenzymes. And therefore, it's a great importance for drug discovery to predict the propensity with which the molecule will cause significant drug interaction. Okay, and to determine which isoforms are affected. Now, this Swiss ADME enables the estimation for a chemical to be substrate for PGP or inhibitor for the most important CYP isoenzymes. And they have applied the SVM method, that's the support vector machine learning algorithm, to meticulously clean. मतलब क्या किया, वो जितने भी इनहिबिटर्स है ना CYP की, सारे इनहिबिटर्स की एनालिसिस किया, उसका मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर देखा, उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया, कैसे कैसे इंटरेक्शन किया होता है वो स्टडी किया, और वो सेट को यूज करके बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल तुम बताओ, बनाओ, क्या उसका स्ट्रक्चर या फिर केमिकल डिस्क्रिप्टर इससे मिलता जुलता है या नहीं. अगर मिलता जुलता है तो that is going to act as an inhibitor, and if it is not, then it's not going to act as an inhibitor, right? So any drug, it should not be an inhibitor for this molecule. A drug should not be. Okay. So obviously ibuprofen was a drug. Now it is not used. It has been taken away from the market because of its toxic side effects. Okay. So it's not an inhibitor. Next you have the KP or the log KP, that is the skin permeation. What is this? Skin permeation मतलब तुम्हारा स्किन से ये क्या स्किन को परमिएट करके अंदर तक जाएगा. Now why is this important? It is important for skin drugs. जैसे कि सपोज तुम्हारे पैर पे चोट लग गई है तो हम लोग वॉलिनी स्प्रे लगाते हैं ना, या मूव लगाते हैं, दर्द हुआ था तो मूव लगाते हैं. पर अगर तुम कैलपॉल को हाथ में मल लो, क्या दर्द कम होगा? कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसका स्किन परमिशन है ही नहीं. जैसे कि आइबुप्रोफेन का स्किन परमिशन क्या है, -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. पर अगर यहाँ पे तुम वॉलिनी की स्किन परमिशन डाल दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका प्लस वैल्यू है. क्यों है? क्योंकि वो कितना फास्ट, अभी देखो -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो कोई चल नहीं सकता. कोई माइनस सेंटीमीटर चल सकता है? नहीं, मतलब ये स्किन परमिशन नहीं है. पर अगर तुम वॉलिनी या मूव की डालो तो उसको देखेगा कि उसका स्किन परमिशन है. व्हाई? बिकॉज वी अप्लाई इट ऑन द स्किन. केपी जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा जल्दी परमिट करेगा. एकदम ठीक, एकदम ठीक. वो ज्यादा जल्दी परमिट करेगा. अब जिसका अभी वॉलिनी मूव का हो, ओरल ड्रग के लिए ये मायने नहीं रखता. इट इज ओनली फॉर द स्किन ड्रग्स. स्किन. पर उल्टा भी है, अगर कोई ड्रग को जैसे कि स्किन ऑइंटमेंट होता है, बहुतों को तो स्किन प्रॉब्लम होती है, एलर्जी, स्किन एलर्जी एंड ऑल, तो उसके लिए वो दवाई हाथ पे लगाते हैं, स्किन दवाई. ना एवरी स्किन दवाई शुड नॉट गो टू योर बॉडी. ये कुछ इन्फेक्शन होती है कि स्किन पे आउटर साइड पे ही होती है. दैट मॉलिक्यूल शुड नॉट परमिएट योर बॉडी. नहीं तो क्या हो जाएगा, वो अंदर चला जाएगा. दैट वी डोंट वांट. But there are far molecule like Volini move. For that we want the molecule to move through the skin to the pain receptors. कि जल्दी आराम पहुंच जाए, उसके लिए चाहिए. So there are only specific set of molecules that are required for this particular thing over there. Okay. And next is the most important, that you have the drug likeness. यहाँ पे देखो लिपिंस्की, घोष, वेबर, ईगन, मुएग सारे के ड्रग लाइकनेस पैरामीटर. जैसे कि लिपिंस्की की फॉलो करता है, इट फॉलोज लिपिंस्की विदाउट जीरो वायलेशन. Again, if you simply hover your pointer to this question mark, in short, you can see the parameters. That is molecular weight, M log P, N or O is the hydrogen bond donor, sorry, acceptor, where NH and OH are the hydrogen bond donor. Okay, like फिर घोष का भी है, वेबर का भी है, ईगन का भी है. Now these are the most important and widely used, Lipinski and Ghosh, but there are other factors also like ईगन, मुएग, वेबर, इसका भी अलग अलग है. And this molecule follows the drug likeness parameter of everyone.
तो IgAN का क्लिक कर लो तो पता चल जाएगा कि क्या है इसका है TPS should be less than 131.6 and WLP should be less than 5.88. These are only the true criteria for this particular IgAN parameters and all, and it follows everything. And next you have the bioavailability score, that is 0.85. What is bioavailability score? Remember bioavailability, that is the amount of drug absorbed by divided by drug dose, that is यहाँ पे 0.85 मतलब 85% of the drug is actually gets absorbed through the entire system very efficiently. Clear? Sir, what should be its normal value? The higher the better, क्योंकि जितना Okay. bioavailability high हो, because what is bioavailability? It is amount of drug absorbed by drug dose. तो ये जितना कम होगा मतलब क्या है, ड्रग डोज बहुत हाई है बट अमाउंट ऑफ ड्रग एब्सॉर्ब बहुत कम है. डू यू वांट दैट? हम चाहते हैं कि अगर 500 mg का दवाई लिए हैं तो 500 mg शुड गेट एब्सॉर्ब. Yes, sir. अगर नहीं हुआ मतलब दैट्स अ लॉस, राइट? Yes, sir. वी डोंट वांट द लॉस. सो जितना बेहतर हो उतना बेहतर. नाउ ऑब्वियसली दिस इज नॉट हाईली एक्यूरेट एंड जनरली इट गिव्स यू अ जनरल आइडिया. कोई भी दवाई का ले लो तो वो जनरली 0.9 0.85 0.8 0.75 ऐसा ही दिखाता है, इतना परफेक्ट नहीं दिखाता है. ओके, सो इट डजंट मीन दैट कि 85 खराब है यार, बहुत कम है, नहीं है. 85 मतलब ये हाई एब्जॉर्प्शन ही है. ओके, ये तो एक्यूरेट एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, इट ओनली गिव्स यू जस्ट आइडिया कि है या नहीं. ओके, next you have the medicinal chemistry. Why it is important? This is important for synthesizing of the molecule. That means what is the synthetic accessibility? 1.92. मतलब इस molecule का अगर मुझे synthesis करना है, is it a very easy synthetic process? It tells you that 1.92 is 1 is very easy and 10 is very difficult. My molecule is 1.92. That means it is very easy to synthesize this particular molecule. और एक दवाई के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो उसका synthesis pattern भी easy है या नहीं, because I have to mass synthesize it, right? हमें तो करोड़ों पिल्स बनानी है, पर अगर सिंथेटिक प्रोसीड्यूर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया तो उसे बनाने में मुश्किल भी बहुत ज्यादा होगी, राइट? सो द मोस्ट इजियर फॉर्मेशन, मोस्ट इजियर सिंथेसिस, द बेटर योर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट यू हैव द लीड लाइकनेस. क्या ये मॉलिक्यूल लीड मॉलिक्यूल बन सकती है? इट सेज नो. व्हाई? बिकॉज देयर इज वन वायलेशन. द मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 250 and to become a lead, what is lead molecule? Lead molecule means that you can actually manipulate that particular molecule. तो वो मॉलिक्यूल को मैनिपुलेट कर सकते हो दूसरा नया नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए. नाउ ऑब्वियसली इफ अ मॉलिक्यूल इज टू स्मॉल, उसे चेंज करना मुश्किल हो जाता है, राइट? जैसे कि ये मॉलिक्यूल इतना छोटा है, यहाँ पे तुम कितना चेंज करोगे? बस 1 2 3 4 जगह पे ही चेंज कर सकते हो. बट इफ इट्स अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल हुआ, लार्ज मॉलिक्यूल हुआ, तो क्या होगा? उसका तो एटम्स भी ज्यादा होंगी, राइट? सो इफ इट हैज मोर एटम्स देन यू कैन चेंज मोर एटम्स. ओके, Yes, sir. तो वही यहाँ पे दिखाता है द लीड लाइक parameters. Then you also have the parameters called Pales and Brink. Pales and Brink, what are these? These are actually, do you know what are these? Pales and Brink? No, sir. These are actually the part of the medicinal chemistry section. What? And these are actually two complementary pattern recognition methods that actually allows the identification of potentially problematic fragments. So what is PANS? PANS is actually the pan-assay interference compound. These are the molecules that contain substructures showing potent response in assays irrespective of the protein target. And such fragments yielding either the false positive biological output, they have been identified by various other scientists. Tell you, ये सिंपली देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल वार्निंग देता है या नहीं. इफ पेन्स फ्रैगमेंट पे जितना भी मॉलिक्यूल्स है, दीज आर, मतलब ये फ्रैगमेंट, ये टेंडेंसी, ये केमिकल स्ट्रक्चर रहने से इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर योर बॉडी. तो क्या ये मेरा जो मॉलिक्यूल बनाया है, मॉलिक्यूल दैट आई हैव डेवलप्ड, वो क्या फ्रैगमेंटेड होती है? क्या वो हमारी अंदर ये भर सकती है? क्या वो पोटेंशियली टॉक्सिक उसका कोई कंपोजिशन है? इट सेज जीरो अलर्ट, मतलब कुछ नहीं है. दिस इज अ वेरी परफेक्ट मॉलिक्यूल. ओके, सेम थिंग फॉर द अदर, द बैंक आल्सो, ब्रिंक आल्सो. नाउ सी सेकंड मॉलिक्यूल ओमिप्राजोल, इसका भी देखो टेंडेंसी अलग है और इसका ये भी अलग है. देखो ये पोरली सॉल्युबल, सॉल्युबल, सॉल्युबल. Then you have the other alerts also. देखो इसका बायोअवेलेबिलिटी स्कोर इज 0.55. बट इतना कम क्यों हुआ? बिकॉज ओमिप्राजोल इज अ गैस्ट्रिक ड्रग.
It should not get absorbed. गैस तो पेट में होता है, राइट? So it should stay in the stomach. इसे absorb नहीं होना है. That is why the bioavailability score is less. मतलब ये absorb नहीं होगा. जितना देर पेट में रहेगा उतना बेहतर है, उतना ये इफेक्ट दिखा पाएगा, गैस को रिड्यूस कर पाएगा. That is why इसका ओमेप्राजोल का ये bioavailability score is कम ही है, and we want it to be less. So every molecule सबका हाई नहीं होगा. Depending upon its action, depending upon its activity, the thing will change. Okay. सिमिलरली देखो ये मॉलिक्यूल जो 3 है, इसका देखो इनसैचुरेशन बहुत हाई है, बाहर ही निकल गया, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली, एंड दैट्स व्हाई सी मॉडरेटली सॉल्युबल, मॉडरेटली सॉल्युबल, मॉडरेटली सॉल्युबल. अब देखो ये CYP इनहिबिटर का भी काम करते हैं ये तीनों का, इट आल्सो एक्ट्स लाइक दैट. So that is why there are different molecules. This is going to give you different result, and depending on the result you can edit the structure. अगर तुम ऐसे molecule देख रहे हो तो you have to reduce the insaturation so as to increase the bioavailability score and the water solubility and everything. Okay, clear? Clear, sir. So this is the server that really allows you to see the entire pharmacokinetic parameter, और जो तुम molecule design किए हो, is it a very good molecule? Because उसे तो लेके तुम्हें आगे बढ़ना है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी मॉलिक्यूल हमने बनाई हो वो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड मॉलिक्यूल, राइट? इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड, बट इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक. मतलब तुम कोई भी चेंज करो तो व्हाई यू आर मेकिंग दैट चेंज, यू हैव टू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड. ओके, so this is that particular server that gives you an idea about whether the molecule is going to work or not. So simply develop some molecule, उसका smile notation निकालो और यहाँ पे सर्च करके देखो molecules perfectly है या नहीं. Clear? Clear, sir. Okay. So this is the first step that we have cleared on developing a particular molecule, the cat. Okay? Sir, Okay. हाँ बताओ. क्वेश्चन था सर मेरा. हाँ बताओ, कोई क्वेश्चन? हाँ सर, अगर कोई मॉलिक्यूल को डेवलप करना है, हाँ, तो सबसे पहले इसके टारगेट की जानकारी भी हमको होनी चाहिए कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, एकदम मैं तुम्हें बताया था ना कि मॉलिक्यूल देखो दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग, एक होती है लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग. लिगैंड बेस्ड, यस. सो इफ इट्स अ स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग देन यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर. तुम्हें प्रोटीन स्ट्रक्चर देखना होगा, उसे एनालिसिस करना होगा. वो सब कैसे करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, होमोलॉजी मॉडलिंग एंड ऑल. ओके, so next step would be that particular thing, how to perform the homology modeling, protein को structure की कैसे idea ले, ये सब ले, that's going to be different. And if it's a ligand based drug designing, then of course you don't need the idea of a particular structure, बस ligand की structure is only important. Clear? Clear. Okay, fantastic. Okay, then we meet again at the next class में meet करते हैं, फिर आगे देखते हैं और क्या पढ़ेंगे. ठीक है? Yes, sir. Okay. But you, हाँ बताओ. स्पेसिफिक बुक है सर इसके लिए जो मतलब घर पे पढ़ सके, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ. हाँ ठीक है. ओ मैं तुम्हें बुक नाम भेजी नहीं है ना, तो मैं भेज देता हूँ. ओके, आई एम गोइंग टू सेंड यू द नेम ऑफ द बुक्स. ये सर के भी मतलब व्हाट्सएप वगैरह पर भी आप. हाँ ठीक है, श्योर. मैं तुम्हें नाम बुक का नाम मैं भेज देता हूँ तुम्हें. ठीक है? यस, एकदम. थैंक यू सर. श्योर. चलो बाय. बाय सर. प्रणाम सर. बाय. या